Hello everyone. As you know that I am doing Indian Polity by Laxmikanth. Uh, Previous classes we have seen three parts of chapter 1. This is part 4. Okay, so the chapter 1 is nothing but it's a historical background. So this is about myself. Let's see the part 4 of chapter 1. Okay, so as you know that we are doing Indian Council Acts. Okay, so today we are going to see the Indian Council Act of 1892. Okay, so these are the some of the features that we'll see. Okay, we'll see one by one and we'll try to understand what this Indian Council Act says. Okay, let's read here. It increases the number of additional non-official members in central and provincial legislative councils but maintain the official majority in them. Okay, so what they have did in with this Council Act, Indian Council Act, they have actually increased the number of members that was non-official in the central as well as provincial council. Okay, but they have maintained the majority. ठीक है, तो उनकी सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पे देयर वाज councils, legislative council, so they have actually increases the non-officious members using this Indian Council Act. Okay, तो उसमें उन्होंने किया क्या कि ऐसा करके जो इंडियंस थे उनको उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा फिल करना शुरू किया. उससे इंडियंस को ऐसा लगेगा कि ये दे आर डूइंग गुड फॉर अस. ओके, so it was nothing but something characteristic policy. Second point, it increased the function of legislative council and gave them the power of discussing budget and addressing questions to the executive. See, ये इन लोगों ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फिल किया और जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें ये बोल दिया कि ठीक है, ये पावर दे दिया कि ठीक है आप जो है आप बजट डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये सब चीज़ें एड्रेसेस क्वेश्चंस. तो इंडियंस को ये सब करने में बड़ा अच्छा लगता था कि पहले तो जाने ही नहीं देते थे, फिर उन्हें जाने का मौका मिला, फिर नाउ दे आर डिस्कसिंग बजट, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस. तो ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ी चीज़ थी फॉर द इंडियंस. ओके, it provided for the nomination of some non-official members of. ओके, देखिए अब इसमें इन्होंने कुछ नॉमिनेट किया था some of the non-official members. The Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce. ठीक है, देखिए कुछ इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई जो वाइस रॉयज थे उनके रिकमेंडेशन से. ओके, ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड जो वहाँ उस समय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, इनका भी रिकमेंडेशन लिया गया था फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ओके, बी पॉइंट that of the provincial legislative council by the governor on the recommendation of district board, municipalities, university, trade association, जमींदार्स एंड चैम्बर. देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने दो लोगों का रिकमेंडेशन लिया, एक तो वाइसरॉय इटसेल्फ का और बंगाल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, बट टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई द गवर्नर, प्रोविंसेस में गवर्नर्स हुआ करते थे, तो गवर्नर्स का एंड ऑल्सो रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स. सो with these they have taken recommendation and they were nominate for nominated members. अभी भी आप देखते हो जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से होते हैं. जैसे कि अपने फील्ड में कोई बहुत अच्छा है किसी ने बहुत अच्छा सोशल सर्विस किया है, तो ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट. तो उस टाइम पे भी यहाँ पे नॉमिनेशन होता था, बट वो इसमें रिकमेंडेशन भी लेना पड़ता था फॉर द इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. दे वर
taking recommendation of governors and these places as well. And for Central Legislative Council, they were taking recommendation of Viceroy and Bengal Chamber of Commerce. Okay, so what were the outcome of this Indian Council Act of 1982? Okay, so the act made limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seat both in the central and provincial legislative council. हम लोग अभी देखे हैं इससे पहले वाले में कि वो they were nominated, ठीक है, तो इलेक्शन नहीं होता था, नॉमिनेशन होता था. इट वाज लाइक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट प्रोविजन, ठीक है. द वर्ड इलेक्शन वाज however not used in the act. The process was described as a nomination made on the recommendation of the certain bodies, ठीक है. इलेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया गया था, बट जो नॉमिनेशन हो रहा था वो एक रिकमेंडेशन के थ्रू होता था in the provinces by the governor and some certain bodies like in universities, district board, etc. And in the central legislative council by the Viceroy and Bengal Chamber of Commerce that we have seen in the previous slide. Okay, so this was some of the main outcome of Indian Council Act. Okay, so please remember this. Now we are going to see one more Indian Council Act, that is nothing but is the Indian Council Act of 1909. Okay, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में, so please see this Indian Council Act very carefully. So we'll see some of the features of this. So this act is also known as Morley Minto Reform, ठीक है, इसको Morley Minto Reform भी बोलते हैं. क्यों लॉ, आई मीन व्हाट इज मीनिंग ऑफ Morley Minto? कुछ नहीं, दो नेम्स हैं. लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उस समय जो लॉर्ड मिंटो थे ही वाज द वाइसरॉय. तो इन दोनों ने मिल के बनाया था, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज Morley Minto Reform. So what are the features of this? The first is that it considerably increased the size of legislative council both central and provincial, ठीक है. तो इन्होंने किया क्या था, जो legislative council था, whether it is in central or whether it is in provincial, so with this act they actually started increases the size of the legislative councils. Okay, the numbers of members in central legislative council was raised from 16 to 60, ठीक है. earlier वो 16 था, but with this act they have actually increased up to 60. Okay, the number of members in the provincial legislative council was not uniform, ठीक है. बट जो प्रोविंशियल थे, जैसे कि बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ, वहाँ पे इट वाज नॉट सेम, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है. बेस्ड ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन the number was different, so that's why they are saying it was not uniform. But in central legislative council obviously it will be 1, so 1 means not number, I mean council was 1, okay, but the member was 60. It retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority, ठीक है. देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे दे रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, बट दे अलाउ इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है. वहाँ पे प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे अलाउड, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल. फॉर एग्जाम्पल, members were allowed to ask supplementary questions, move resolution on budget and so on, ठीक है. तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी members उन्होंने नॉमिनेट किया था, ओके, और ऐड किया था उसमें, तो उनके जो फंक्शंस हैं उनको, I mean even the legislative council function they have actually enlarged, but the members, okay, the members
वो अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, जब भी मान लेते बजट पेश हो रहा है तो वो उसको डिस्कस कर सकते थे, दे कैन आस्क यू नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और जैसे मान लेते हैं बजट में उन्हें कोई प्रोविज़न नहीं सही लग रहा है, तो अगर मान लेते उनकी मेजॉरिटी है तो वो रिजोल्यूशन भी पास कर सकते थे कि ओके ये चीज़ आप चेंज कर दो या हटा दो, वॉट एवर इट इज़, ओके। सो बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑब्वियसली they can also move resolutions, ठीक है। So these thing also they have done with this Indian Council Act of 1909, okay। Next, the fourth point for this Indian Council Act, it provided for the first time for the association of Indians with the Executive Council of Viceroy and Governor, ठीक है। तो एक एसोसिएशन बनाया था ऑफ इंडियंस इन द एक्सिक्यूटिव काउंसिल एंड द वाइसरॉय ऑफ गवर्नर्स, ऐसा भी किया गया था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय काउंसिल, एक्सिक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो इंडियंस को नो एक्सिक्यूटिव काउंसिल में ऐड करना शुरू किया। तो और ये फर्स्ट टाइम इस काउंसिल एक्ट के थ्रू हुआ था, विद दिस इंडियन काउंसिल एक्ट दे हैव डन दैट। Who was the first person who became the member of Viceroy Executive Council? It was the Satyendra Prasad Sinha. Okay, he became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council, and he was appointed as a law member. ठीक है, इनको law member भी बनाया गया था। Fine. So please remember this name. Who was the person and like which portfolio he got that? It was the law member. He was a law member. Fifth, it introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू इन्होंने एक चीज़ ये भी किया था कि जो मुस्लिम थे इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ओके। दैट इज ऑल्सो नोन एज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम? अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। तो जैसे मान लेते प्रोविंसेस में कोई मुस्लिम अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, सो ओनली मुस्लिम वोटर्स विल वोट टू देम, ठीक है। So that's why it has been mentioned here. Under this, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. Okay, thus the act legalized communalism. ठीक है। और देखिए इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे ये कास्ट वाली चीज़ इन लोगों ने ला दिया कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा और वही चुन के लेके आएगा। सो दे एक्चुअली डायरेक्टली से द लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, ठीक है। अभी अब आगे एक्ट्स में देखोगे कि नॉट ओनली फॉर मुस्लिम दे एक्सटेंडेड टू अदर कास्ट एज वेल, ओके। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर to whom they have actually increased this provision, okay। Okay, so Lord Minto can to be known as the father of communal electorate, ठीक है। इसी वजह से since he has done like this, like Muslim members will vote to be elected only by the Muslim voters, so Lord Minto came to be known as father of communal electorate, ठीक है। So he was the first person who did this, so that's why they told that the father he was the father of communal electorate, okay। So please remember this. So Lord Minto, father of communal electorate. So these small points to remember, because you will find these kind of statements in the statement based questions, okay। So if you missed any single point, then you will might land with the wrong option, okay। Next, it was also provided for the separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार, ठीक है। और ठीक है, इन चीज़ों के लिए भी, जैसे प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन हुआ, चैम्बर्स हुआ, यूनिवर्सिटीज़ हुआ, जमींदार हुआ, इसके लिए भी उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें in this Indian Council Act they have done. Okay, this act is also very important. Many times they've asked a lot of questions. Okay, and also with this I'm doing polity previous year questions of civil services, and obviously I will do for the other state PSCs exams as well. So if you are targeting this UPSC or state PSC, you can follow that playlist as well, because you'll get a question from 1979 total latest exam. Okay, so as of now I have questions up to 2015, but definitely I will update till the latest exam. And not only for the polity, I have done for the history, geography it's going on, science and technology is going on, economics also I will start. Okay, so science and technology and biodiversity is together, so you can also follow those playlist as well. Okay, because you will find a lot of questions. I think all questions will be around 4,000 questions. So if you're just following those playlists, you will come to know those previous year 4,000 questions which already came in these exams. I mean this not this exam, only in UPSC exams. Okay, the other state PSC if you find you'll get around more than 10,000 questions. That also I will do in the subsequent months. Okay, so please follow this channel so that you'll get a lot of stuff on this channel. Okay, so this was the end of this chapter. This was, I think, I took only 2 acts, and it was a small act, so it took around 15 minutes. Okay, so anyway we'll continue with the long lectures as well based on the topic I'm considering. And I have already mentioned that in the previous classes. So I will consider the whole text of Indian polity by M. Laxmikanth. I'm not going to miss any of the point, even the dot, so that if you're watching this, I will not say no need to read the book. If you have interest, you can read the book, but the whole thing you'll find in this playlist. Okay, even if you're watching, I can say that. Okay, if you're not referring the book, it's okay, because everything you'll get from this playlist. Okay, thank you for watching.